Previously, we have seen two methods to solve simultaneous equation. One is Gauss elimination method and second one was a slight modification of Gauss elimination, that was Thomas algorithm or TDMA, tridiagonal matrix algorithm. We have seen how to use this method to solve simultaneous equation and to find out unknowns like x1, x2, x3 and so on. Then we have solved few numerical related to mechanical engineering problems. Okay, in previous session, last session, we have tried to understand how the flow chart is developed for Gauss elimination method and TDMA method. Okay, so using those flow chart, we will be able to write programs, write generalized program, a program which is capable to solve n number of equations. Okay, now this will be the last session for unit number 2, where we are going to learn a easy method, the easiest or simplest approach to solve simultaneous equation. The name of the method is Gauss-Seidel method. Okay, so let's discuss few important things regarding Gauss-Seidel. Gauss-Seidel is an iterative method. Okay, यहाँ पे आपको iterations करने पड़ते, बहुत सारे iterations करने पड़ते. Now quickly I'll elaborate on the procedure, basic procedure. Next एक एक स्टेप थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ओके, इवन दो अगर वहां पे भी आपको कुछ डाउट होगा, अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल using Gauss-Seidel method. I hope that at that time all the concepts regarding Gauss-Seidel method will be cleared for you. Okay, so try to understand. Gauss-Seidel is an iterative method which is used for solving simultaneous equation. Now Gauss-Seidel method is also have a power has a power to solve n number of equations. The procedure follows like this. Step number 1 for Gauss-Seidel is a partial pivoting. Now we know that even if we deal with Gauss elimination method or TDMA method or Gauss-Seidel method, first step is always doing the partial pivoting. Now all of you know about the partial pivoting. In partial pivoting, we just rearrange the equation so that the diagonal element will be of maximum value. Okay, absolute maximum value. Next step, with the given new set of equation, after partial pivoting, we'll get the correct sequence of equation. Then we take first equation, rewrite the equation to obtain a characteristics equation. Now यहाँ पे सुनने के लिए थोड़ा difficult लग रहा है, but when you look at the process, you will find it very easy to rewrite the equation or obtain the characteristics equation. Don't worry about this. Just remember the second step here is to rewrite the equation. Step number 3. Now here our iteration will start. At the beginning, as we don't have any kind of previous value, we assume that the value of given variable x1, x2, x3, x4 and so on is some guess 0, 1, 2, 3 as per the condition. Okay, most probably all of you should start with a 0 as your initial guess. Okay, then we use those values, those initial guess, and calculate various values of x, and we repeat this step until and unless we hit the stopping criteria. Now stopping criteria, there are two types of stopping criteria. Either the problem statement will provide you some kind of accuracy, so until that accuracy is reached, we need to continue our calculation, or sometimes they will provide you कि भाई लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, कि भाई आप 10 इटरेशन कर या 100 इटरेशन कर. सो अप टू
those many number of iteration we need to repeat the calculation. So this is a general procedure. Layman's terms are used here. Now थोड़ा डिटेल में जाते हैं. Now partial POT सबको पता है. Okay, so we'll not going to again in detail study the partial POT. Here this coming up with the characteristics equation is new for us. So let's see how to rewrite the equation, how to come up with characteristic equation. Okay, so see, take in one scenario where we have this equation, n number of equations. Okay, now assuming we have done the partial pivoting, this is our equation number 1. Okay, now listen carefully, it's the easiest step here. आपको यहाँ पे क्या करना है, rearrange the equation. If this is the equation number 1, okay, rearrange this equation to obtain this kind of format, x equal to something something. ठीक है, ये कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं? See, equation number 1 is here. I would like to make this equation in this format. तो क्या करूंगा मैं? So a11 x1, चलो ये बाकी वाली टर्म है ना, I'll take on to the right hand side. तो क्या होगा, ये सब माइनस माइनस हो जाएगा. ओके, नाउ व्हाट वी हैव, a11 x1 equal to d1 minus something something something. ओके, दिस सर्कल टर्म मुझे क्या चाहिए, x1 equal to, इस फॉर्मेट में चाहिए. only one thing is remaining, a11. okay, so what we will do, this a11 I'll again send it to right hand side. So what will happen, ये पूरा d1 minus a12 into x2 minus dash 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 minus a1 1n xn whole divided by a11 हो जाएगा. That's it. This is called as a characteristics equation. Nothing difficult in this. Okay, so from equation number 1 we will write that equation again. Just मैंने इसको subtraction में लेके गया. Then this a11 onto the right hand side. Okay, so this is your characteristic equation. Similarly, what we will do from equation number 2, अब इक्वेशन नंबर 2 है तो आपका फोकस होना चाहिए x2. So from equation number 2 we will rearrange all the term such that we will obtain x equal to kind of format. Okay, so from equation number 2 we will get this. Similarly, from remaining terms we will form these characteristics equation. सिर्फ नाम थोड़ा अलग है, काम बहुत ही इजी है. So I hope all of you understood rewriting this. Are there any doubt in this step? Step 1 partial pivoting, step 2 rewriting each equation. So if not, we will proceed. Okay, step 3. In step 3 we start our iterations. We assume some initial guess, we put those initial guess into the given characteristics equation, we compute updated values of particular unknown. Okay, now यहाँ पे सिर्फ important term क्या है, because the task is very easy. Remember, always use the updated value of x. जो भी recent value x होगी वो सिर्फ यूज करना है. Okay, I'll try to elaborate here. Now we have completed this step, rewriting each equation. Step 3 is assume initial guess and do the iteration. Okay, so now just see, observe here, iteration number 1 चालू है अपना. Okay, now I would like to calculate this x1 value. x1 कितना हो सकता है?
But right now, to calculate this x1, I should be knowing how much is x2, how much is x3, x4, and so on up to xn. I need all the values of x2 to xn, but we don't have those values. Understand the problem? We don't have the values for x2, x3, x4, xn. Okay. So what we have done, take assumption और assume that x2, x3, x4 are 0. क्या करेंगे, इसमें सब 0 डाल देंगे, 0 0 0. Okay. Now only things remain is d1 divided by a11 and that part is known to us, constant और कोएफिशिएंट मैट्रिक्स से ये सब डेटा मिल जाएगा आपको, d1 और a11 का. Calculate, put that data here, calculate x1. Okay. Now go to equation number 2. Now I need to calculate x2 value. कितना है, updated x2 value कितना है? So to calculate this x2, I need d2, a21, x1, x2, x3, x4 up to xn. ठीक है. Now just recall, in our memory, x3, x4, x5 up to xn are zeros, but x1, in previous step only we have just calculate the value of x1. Okay, so please यहाँ पे सिर्फ you need to remember this x1 value just we have calculated in the previous term, previous calculation. Please put that x1 here, don't put x1 equal to 0, but x3 to x1 xn all the values will be 0. So if we put it, you will evaluate this x2 value. Okay, यहाँ पे x2 का वैल्यू कुछ तो आ जाएगा. Next, so similarly proceed up to the last step for xn. Now you will be having x1, x2, x3 and so on up to xn minus 1. सभी values आपने इस iteration में कहीं ना कहीं calculate की होगी. Use those values and calculate this xn. Okay, so here your iteration number 1 will end. Okay, now again you will repeat for remaining iteration the same process. Again you will go back to the first characteristics equation of x1. Here x2 to xn जो भी previous iteration में calculate किए थे वो यहाँ पे डालेंगे. फिर ये जो updated x1 है we will use to calculate x2 and remaining from the first iteration. Just यहाँ पे आपको दिमाग लगाना है. Also I am going to teach you one trick to avoid any kind of error in this step. So don't worry about it. Just try to understand the philosophy. So I hope you understood this step, third step and remaining iteration. You have to proceed this. You have to do this calculation for number of iteration. Either you will reach maximum number of iteration or you might achieve the given desired level of accuracy. Okay, most probably whenever you face a Gauss-Seidel problem, probably you are going to concentrate only on number of iteration. Rarely they will ask you to solve for accuracy. Okay, again, so whatever we have learned up to now for the Gauss-Seidel method, we will try to implement for the given problem. Okay, now first thing, now all of you please listen. अगर आपका पहले कुछ भी concept बाकी होगा, आपको समझ में नहीं आया, don't worry, again I am going to teach every step here. So this is our problem. We need to use Gauss-Seidel's method to solve and calculate x1, x2 and x3 here. Okay, 3 equations are given to us and we need to do 5 iteration, 5 calculation, 5 iterations करने हैं हमें. Okay, so we are going to begin our step. We are going to solve this numerical. Step 1 is partial pivoting, and not for Gauss-Seidel, for Gauss elimination, for tridiagonal matrix algorithm, Thomas algorithm or Gauss-Seidel, कोई भी method हो, you have to perform partial pivoting. Okay, now those of who don't know about partial pivoting, I'll elaborate.
पार्शियल पिवोटिंग में क्या करना पड़ता है, आपके इक्वेशन जो है, जो गिवन इक्वेशन है, उसको रीअरेंज करना पड़ता है। ओके, उसका नंबर्स चेंज करने पड़ते हैं। हाउ टू चेंज द नंबर? रिमेंबर, assign equation number 1 to a equation of having maximum coefficient for x1। अपना पहला वेरिएबल कौन सा है? देखो x1 है। कौन सा मैक्सिमम कोएफिशिएंट है फॉर द x1? दिस वन। ओके, सो दिस शुड बी योर इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 1 हो गया। नाउ इक्वेशन नंबर 2 आइडेंटिफाई करना है। देन गो एंड सी, ऑब्जर्व कोएफिशिएंट्स ऑफ x2 वेरिएबल। ओके, सो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कौन सा है? 3 वाला। तो ये आपका बना इक्वेशन नंबर 2 and remaining will be equation number 3। okay, so this will be your sequence। so आपको क्या करना पड़ेगा? when you write the solution, treat this as equation number 1, then 2 and then 3। आपका चेंज हो जाएगा सीक्वेंस, अदरवाइज you will be in a big trouble, your answer will be very different from other student। okay, so मैंने क्या किया? पार्शियल पिवोटिंग कर दी। I have changed the sequence। now ये आपका स्टेप नंबर 1 खत्म हुआ। अब गॉस सीडल का स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना पड़ता है? वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाना है या फिर रीअरेंज करना है इक्वेशन के टर्म्स को। ओके, रीराइट द गिवन इक्वेशन सच दैट इक्वेशन नंबर 1 should be in this form, x1 equal to, equation number 2 should be rewritten as or re-expressed as x2 equal to, and last should be expressed in this format, x1 x2 and x3 equal to, इस format में लेके आना है। now all of you are third year student, you will be able to easily do this। तो यहाँ पे अगर x1 equal to लेके आना पड़ेगा, तो मतलब 16 minus x2 minus 2x3 whole divided by 4। this will be your first characteristic equation and so on। so I have rewritten those। step number 2 over। are there any queries or doubt in this step? okay, okay, thank you for the feedback। now we will go for step number 3, that is iteration। अब आप क्या करोगे? कैलकुलेशन, एक्चुअल कैलकुलेशन डेटा ट्राई करोगे। so we will go for that iteration number 1। okay, so iteration number 1, I have just copied the earlier equation। now just use your common sense। Gauss seidel बहुत ही simple है। see this x2, to calculate x1 I need value of x2 and x3। okay, but अपना हाथ खाली है, अपने पास कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो क्या करोगे? कुछ भी नहीं डालेंगे x2 और x3, that means 0। okay, so what will happen? this term becomes 0, this term becomes 0, so x1 will be 16 by 4, right? then we will calculate x2। x2 के लिए मुझे क्या चाहिए? x1 चाहिए और x3 चाहिए। चलो x1 अब भी आपने फाइंड किया है 4, तो 4 की वैल्यू x1 की जगह रखेंगे। x3, x3 अपने पास नहीं है, हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो एज्यूम करते हैं x3 0, बिकॉज अर्लियर वी हैव एज्यूम x2 एंड x3 बोथ आर 0। okay, so x3 become 0। so 10 minus 4 divided by 3, that is 2। okay, नाउ लास्ट टर्म x3, x3 के लिए मुझे क्या चाहिए? x1 चाहिए। हाँ, यहाँ पे हमने x1 निकाला था अभी, दिस 4, I'll use that 4 here। then I need again x2 also। so x2 अब भी जस्ट प्रीवियस स्टेप में हमने फाइंड किया है, so x2 यहाँ पे पुट करेंगे। so x1 की जगह 4, x2 की जगह 2, 12 minus 4
So you got 4 divided by 5 or 0.8. That's it. This is your iteration number 1. Similar procedure you need to follow it for remaining iteration. Okay. So ये मैंने थोड़ा रफ ड्रॉ करके दिखाया आपको. Similar procedure I have followed. See the animation here. So for x1, assume x2 and x3 equal to 0. Use that to calculate x1. 4 निकाला. Then for x2, take x1 equal to 4 जो अब भी कैलकुलेट किया हमने, and x3 जो पुराना है वो कैरी किया. So same, we calculated x2. Now we have value of x1 which is equal to 4, x2 which is equal to 2. Take these x1 4, x2 2 and use it to calculate x3. You got 0.8. Okay. So iteration 1 over. We need to repeat the same procedure for remaining iteration, remaining 4 iteration. Okay. So always remember, whenever you present your solution, clearly each and every step you need to present for iteration number 1 only. For remaining iteration, please use table format. Okay. बाकी का सब tabular format में लिख दो. So मैंने वो सब calculation फिर से किए. See here. So iteration number 1 is over. We got 4 to 0.8. Then for iteration number 2, I'll begin with the same formula, but with updated values of x2 with updated values of x3. Okay, those are nothing but 2 and 0.8. I'll put it here. I'll calculate x1. Okay, then I'll proceed with x2. Now please listen carefully. यहाँ पे बच्चे मिस्टेक क्या करते? To calculate this x2, new x2 for second iteration, he need x1 and x3. Okay. Now x3 we have only one value of x3, that is 0.8. So I'll use 0.8 here x3 के जगह पे. x1 के लिए I have two values, this 4 and I have one more value 3.1. Which do you think I should be using to calculate this x2? Please enter your answer in the chat window. Okay, so all of you are correct. We should be using 3.1. Okay, so क्या होता है, मेमोरी में x1 है, पहले 4 था, अब आपने कैलकुलेट किया सेकंड इटरेशन में, इट बिकम्स 3.1. तो क्या होता है, जब भी अपडेट होगा वो पुराना वाला इरेज हो जाता है. हमने मैटलैब सीखते टाइम देखा था, ओल्ड वैल्यू गेट्स रिप्लेस विद द न्यू वैल्यू. ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर, यूज द रीसेंट वैल्यू. जस्ट ये आपके दिमाग में रखो. ओके, सो दैट्स इट. Similar steps you can follow to do all the calculation. Okay, and at the 5th iteration, because we need to do up to 5 iteration, 5 iteration खत्म होने के बाद please rewrite or state your solution कि भाई मेरा x1 is 3, x2 is 2.002 and x3 is 0.999 after 5 iteration. This is your solution. Are there any doubt in this part? सब गॉस सीडल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? Okay, thank you. Now I am going to demonstrate a small kind of cheating you can do in the exam. Now remember, अपना हर एक एग्जाम पेपर, क्वेश्चन पेपर में एक इम्पोर्टेंट नोट दिया जाता है कि भाई प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड इन द एग्जाम. बट इवन दो दैट इज स्टेटेड क्लियरली इन द क्वेश्चन पेपर, no one bothers to check कि our calculator is programmable or not. Okay, so in previous case in Newton Raphson वगैरह I have demonstrated how to
feed the formula. Okay, that is nothing but kind of a program only. So even though we don't allow to have a programmable calculator, but no one cares, no one bothers to check actually. So most of you are having a 991 FX वाला calculator. ठीक है, कैसियो का 991 यूज करते होंगे मैक्सिमम स्टूडेंट. So by using that calculator, within few minutes you will be solve this kind of problem, and you can perform around 10-20 iteration within few minutes only. So how to solve Gauss-Seidel problem using 991 calculator, I'll try to demonstrate. Okay, so all of you, those who have a calculator lying there, please bring it to yourself, check out this calculation. Okay, all of you can see this. Ganesh Jadhav, why you are entering your roll number? Okay, so there is some problem with that guy. Now, are you guys able to see this calculator? Is it visible to all? Okay. Now, this is your normal calculator with you. What we are going to do here, we are going to write a small program. Okay, but we will not call it as a program, otherwise it will be treated as a cheating. Okay, so हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला बनाए ना हमने कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, we are going to feed, okay, feed these three equation in our calculator, and using the calculator itself we will come up with all these values. Okay, all 5 iteration we will do. Now please check out this. Okay, so first प्लीज कहीं पे भी डाउट होगा आप चैट विंडो में बोल दो. कुछ भी प्रॉब्लम आया आपको तो. नाउ फर्स्ट थिंग, please note x1, x2, x3 are not available in our calculator. So instead of that, I'm going to treat x1 as a capital A, x2 as a B, x3 as a C, because those alphabets are available with our calculator. Okay, so जहां जहां पे भी x1 होगा वहां पे मैं A टाइप करूंगा. So alpha A type हुआ. Then I need to type equal to sign. So don't press this equal to. बॉटम राइट कॉर्नर वाला इक्वल टू प्रेस नहीं करना आपको. कौन सा करना है, ये अल्फा CALC. Okay, calc. Understood this? Then just enter these first formula. So I'll use parenthesis 16 minus x2. x2 is B. Minus 2 times x3 मतलब 2c. Parenthesis close, divided by 4. Okay, so this is the formula for x1 और A. Got it? अब मुझे क्या करना है, x2 का फॉर्मूला भी यहाँ पे एंटर करना है. ओके, सो सी केयरफुली दिस स्टेप. प्रेस करो अल्फा, एंड ये CALC के बाजू वाला इंटीग्रेशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन वाला जो सिंबल है ना, वो फंक्शन, वहां पे देखो कोलन है, कोलन. यूज दिस कोलन, अल्फा कोलन. अंडरस्टूड? अल्फा कोलन. ओके, अब क्या करना है आपको, x2 का फॉर्मूला टाइप करना है. x2 का फॉर्मूला, x2 मींस b, तो अल्फा b इक्वल टू पैरेंथेसिस 10 माइनस x1 मतलब a माइनस x3 मींस c, पैरेंथेसिस क्लोज, डिवाइडेड बाय 3. अंडरस्टूड? तो हमने x2 का भी फॉर्मूला एंटर कर दिया, फीड कर दिया. अगेन थर्ड फॉर्मूला एंटर करने से पहले कोलन, अल्फा, दैट इंटीग्रेशन वाला बटन, कोलन आ जाएगा. नाउ x3 दैट इज c, तो अल्फा c इक्वल टू पैरेंथेसिस 12 माइनस x1
minus 2x2 divided by 5. ओके, अंडरस्टूड। अब कोलन डालना नहीं है, अब कोलन डालने की जरूरत नहीं है। दैट्स इट, 3 इक्वेशन हमने यहाँ पे एंटर कर दिए। वॉच द नेक्स्ट स्टेप केयरफुली। नाउ जस्ट क्लिक ऑन CLC, calc. Okay, click on calc. He is going to solve this equation. Okay, to solve this equation I need value of x2, I need value of x3. That means he is going to ask me b कितना है और c कितना है। ठीक है, तो कैलकुलेटर पे जाते हैं वापस। सी, ही इज आस्किंग b क्वेश्चन मार्क, ही इज आस्किंग टू एंटर b वैल्यू विच वी डोंट हैव, विच इज 0। वी विल एज्यूम इट इज एज 0। तो यहाँ पे 0 प्रेस किया, इक्वल टू मतलब एंटर हो रहे हैं। नाउ अगेन ही इज आस्किंग मी फॉर सी का वैल्यू भी मुझे 0 ही डालना है, तो 0 इक्वल टू, देखो a कितना आया 4, मैच हो रहा है आपका आंसर। Now again press equal to sign, automatically it will carry forward the a b c value। मेमोरी में जो भी अपडेट हो रहा है वो सब लेके वो आगे के कैलकुलेशंस कर रहे हैं। So this is your program, just press equal to sign, b, got it, 2, got it 2। यहाँ पे भी देखो 2 है, राइट। Okay, now when I press equal to sign, he will calculate c का वैल्यू, that is x3, 4 by 5, see 0.8, 0.8 सही है अपना, 0.8। okay, same we will do it for remaining calculation। again press equal to, now when you press equal to, he is again going to ask me x2 कितना है, x3 कितना है, मतलब b कितना है, c कितना है। डोंट एंटर एनीथिंग, बिकॉज उसके मेमोरी में ऑलरेडी b और c अवेलेबल है। डोंट वरी, अब इसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड से इक्वल टू प्रेस करो एंड राइट हैंड से नोट डाउन द वैल्यूज, ए बी सी डी के वैल्यू, ए बी सी के वैल्यूज नोट डाउन करोगे। दैट इज योर इटरेशन। सो सी इक्वल टू प्रेस करूंगा, बी हाँ 2 है, सी 0.8 है, सही है। सो दैट मीन्स ए इज नाउ 31/10, 31/10। राइट हैंड से आपने नोट डाउन कर लिया कि x1 इज 3.1। अगेन प्रेस इक्वल टू साइन, सी दिस इज b का वैल्यू, 61/30। इंजीनियरिंग करके देखो तो 2.003, 2.003 सही है। देन प्रेस इक्वल टू साइन, सी कितना आ रहा है देखो, 0.966, 0.966 एंड सो ऑन। ओके, आई होप मैंने थोड़ा स्लोली बताया, बट आफ्टरवर्ड यू कैन डू इट वेरी क्विकली, सो डोंट वरी। जस्ट आपको प्रेस करना है इक्वल टू बी ओल्ड वाला, सी 0.996, नया वाला सी ए 3.008। जस्ट प्रेस करते जाओ, इक्वल टू बी सी मिलेगा, फिर से बी और सी कॉल करेगा। अगेन ही विल कैलकुलेट x1, x2, x3। कैलकुलेट हो गया, प्रेस इक्वल टू बी कॉल करो, सी कॉल करो, अगेन नेक्स्ट इटरेशन एंड सो ऑन। okay, I hope all of you have understood this। are there any doubt in the calculator? so within 2 to 3 minutes just आपको, you will take time to enter the formula। okay, have a patience, carefully enter the formula। उसके बाद ज्यादा कुछ काम नहीं है, जस्ट इक्वल टू प्रेस करना है आपको। ओके, so are there any doubts? if not, we are going to go for flow chart for Gauss-Seidel problem formulation। okay, I'm going to cover quickly
So we'll start with flowchart. Now flowchart for Gauss Seidel problem also, our input data will be similar to our Gauss elimination on TDMA, coefficient matrix and constant vector. In addition to that, as this is a iterative method, we need to provide maximum number of iteration. Okay. Now remaining two things are same. We have seen this earlier. To find out how many variables we are dealing here, we need to calculate. I have used this command, n equal to length of d. Then to create a blank bucket which will store all the values of x, मैंने एक command use किया है, x equal to 0 n comma 1. n means number of values of x. तो क्या होगा, प्रोग्राम या मेमोरी में एक x नाम का मैट्रिक्स क्रिएट होगा which will have n number of rows and one column. Okay, so that means x1, x2, x3. Then our Gauss Seidel method suggests assume initial guess. Okay, first initial guess हमने assume क्या किया था, x2, x3 was 0. So by using this command zeros, हमने क्या किया, x1, x2, x3 are made it 0. इन सबको 0 0 लिख दिया. Okay, so this is it for first part. Okay, now next part, after creating that x array, we know that we need to repeat the calculation for those characteristics curve, characteristics equation x1, x2 and x3. हमने देखा अभी कि सेम फॉर्मूला हमने 5 बार सॉल्व किया. That means it's an iterative calculation. Whenever we face iterative calculation, repetitive task, we use a loop. Okay, so here I have included one loop. For iteration 1 to maximum iteration, do the following calculation. जो calculation करने वो बाद में देखते हैं. Okay, so don't worry about it. We need to perform these calculation up to maximum iteration. Okay, वो क्या कैलकुलेशन है वो चेकआउट कर लेते हैं. To understand that little bit clearly, let's assume there is a four set of equation. We have written them in the format of matrices. Okay. Now Gauss Seidel method step 2 suggests that we need to rearrange the given equation in this format. Okay, इस फॉर्मेट में हमें लिखना है. तो यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि कैसे लिखते. ओके, बट व्हेन वी ट्राई टू हैंडल around 100 equation or 1000 equation, manually entering them is critical. It is impossible. So उसका कंप्यूटर का यूज है वो फालतू में हो रहा है अपना. Okay, so that means this generation of function, this function should be automated. इसको भी ऑटोमेटिक जनरेट होना चाहिए ये फॉर्मूले. ओके, तो उसके लिए हम वी विल थिंक ऑफ सम जनरलाइज्ड फॉर्मेट. वी विल ट्राई टू come up with a generalized format for this. Okay, so here try to look into the pattern. Pattern कैसा है देखो. We will start with x1, फिर x2 फाइंड करेंगे, फिर x3 का इक्वेशन लिखेंगे, फिर x4 का इक्वेशन लिखेंगे. Okay, then if you look at the pattern, it is varying like 1 2 3 and 4, which is nothing but your row number. रो नंबर 1 से आपने ये डिराइव किया है, रो नंबर 2 से ये डिराइव किया है, रो नंबर 3 से ये डिराइव किया है, रो नंबर 4 से ये डिराइव किया है. ओके, सो आई विल ऐड अ फॉर लूप which start from row number 1 and it will go up to row number 4 which is n. जनरलाइज फॉर्म में n है हो गया वो. ओके, now look at here. If I try to make a generalized form, generalized equation which is valid for
x1 x2 x3 x4 सभी इक्वेशन के लिए जनरलाइज बनाना है। ओके, सो नाउ सी 1 जहां पे है वहां पे i लिख के देखते हैं। ओके, सो x ऑफ i इक्वल टू d ऑफ i whole divided by a of i comma I. Now this you easily understood. We have seen this in the Gauss elimination method also. अगर यहाँ पे 1 है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 1 1 आ जाता है। Got it? Now if we try to come up with some format here, okay, थोड़ा difficult to get the format, okay, थोड़ा format लेने के लिए difficult है। Now we will think of that also, so don't worry, and go to previous slide. Okay, so when I write a equation for x1, d1 minus a12 into x2 into, sorry, minus a13 x3 minus a14 x4, ये पैटर्न हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे लैकिंग कौन सा है? डायगोनल एलिमेंट। a11 into x1 we have taken on to the लेफ्ट हैंड साइड, फिर a11 डिनोमिनेटर में गया तो ये ऐसे गायब हो गया। ये जो सबट्रैक्टिंग टर्म है ना उसमें से this term is missing, and if you recall the earlier step, that is the term belongs to I. Okay, so I is not available, this I is not available in this subtracting term. Similarly if we go for the second, अब देखो ये available है in the, only focus on the subtracting term, this is available, ये not available, checked, check. Okay, similarly x1 available है, x2 absent है, x3 and x4 are available. That means whenever I work on ith term, I के पहले वाले टर्म अवेलेबल है, I के बाद वाले टर्म अवेलेबल है, only absent term is I. Let's check out for x3. For x3, see, for x3 only focus on subtracting term, these values are available, okay, along with the x1 x2, this is absent because that is ith term, and also next values are available. Okay, so you are getting some kind of pattern. The pattern is, if I am working on a characteristics form equation on ith row or I element, okay, जो subtracting term है उसमें 1 to I minus 1, ठीक है, 1 अप टू I minus 1, उससे पहले वाले टर्म तक सभी वैल्यूज है। ओके, देन I is absent, उसके बाद I plus 1 up to last term all values are available. So 1 to I minus 1 and I plus 1 to n are available. Only term which is not available, that is I, but we are working on it. We are working on it. So remember this pattern. Based on this pattern, we came up with the formula. Okay, a general formula. See that general formula, थोड़ा difficult to remember होगा, but the pattern is something like this. See, I comma 1 to I plus I minus 1 and बीच वाला ith term missing, उसके बाद jump किया I plus 1 to n, I plus 1 to n. So this is the general form for n number of equation. कोई भी कितने 100 हो 1000 हो, आपका ये जो फॉर्मूला है ये वर्क होगा। So I have written it for flow chart and this is the complete flow chart. इसके बाद क्या होगा, in our memory of a program I'll get all the values of x for
मैक्सिमम नंबर ऑफ इटरेशन, जो भी गिवन नंबर ऑफ इटरेशन होगा उसके लिए कैलकुलेट होगा. सो लास्ट थिंग वी नीड टू प्रिंट द एक्स. दैट्स इट. टेक अ मिनट टू take a screenshot of this given flowchart, so that it will help us in writing MATLAB program for Gauss-Seidel method. Okay, so I hope I'll assume that you have taken the screenshot of this flowchart. Now going back to the Gauss-Seidel method and its how to use Gauss-Seidel method to solve problems by doing manual calculation. This was part for program. Now for manual calculation, we will see one more numerical. This numerical for you guys. Okay. So read the problem statement carefully and start working on the solution. Okay. So in chat window, I'm going to provide you a link for Google form. Okay. But we are going to validate the attendance given in the Google form with your solution and your roll number इन द चैट विंडो. ओके, तो आपको क्या करना है, ये गूगल फॉर्म में जाके आपके अटेंडेंस रिकॉर्ड करो. ओके, कम बैक टू द जूम मीटिंग, सॉल्व दिस न्यूमेरिकल, देन इन द चैट विंडो राइट योर रोल नंबर, देन x1 आपका कितना आया, x2 and x3 using Gauss-Seidel method. Okay, you have to enter this in Zoom मीटिंग का चैट विंडो. ओके, तो गूगल फॉर्म भी भरो और चैट विंडो में भी ये डेटा एंटर करो. ओके, आई एम गोइंग टू वैलिडेट योर अटेंडेंस फ्रॉम गूगल फॉर्म एंड with the Google Zoom chat. Whenever you find any problem, please you can put your query in the chat window or you can unmute yourself. अनिकेत, आपका आंसर हो गया, मिल गया? Okay, without answer I am not going to count it his or her attendance. So whenever you find any difficulty or query, please you can unmute yourself and ask me directly.